अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ुनैर। आज हमारे साथ खुसूसी तौर पे कराची से आए दो दोस्त और नॉर्वे से डॉक्टर राजा खुर्रम इकबाल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने रिसेंटली एक कंपनी, एक स्टार्टअप जो है नॉर्वे से स्टार्ट किया है, डिजी ट्रेंड्स के नाम से। इस हवाले से एक ट्रिप इनका यहाँ पे, इनका जो बिज़नेस ट्रिप था उसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और हमें हमें आज इन्होंने टाइम दिया। डॉक्टर राजा खुर्रम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समद भाई हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, और तलहा भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा तलहा साहब से। तलहा साहब, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे सोचा, और क्या क्या आपने जो है हासिल किया इससे? सोचा कैसे बस इत्तेफाक के तौर पे कि समद नॉर्वे आया और एक इवेंट के अंदर वहाँ ही मेट राजा खुर्रम एंड इत्तेफाक से इनकी दोस्ती हो गई। थोड़ा बहुत इन्होंने आपस में डिस्कशन करा। राजा वाज लुकिंग फॉर सम सॉफ्टवेयर इन हेल्थ केयर और समद already has the experience in the, I mean, we were back in Pakistan, we were working in the healthcare already. So they just met, or amazingly, we invited Khurram in Pakistan to visit us. Then Khurram and another guy named Henry, which is also our partner. They both came to Pakistan, visit us. We went to Karachi, we went to Lahore, and then we are just become close friends, and then we become partners. And now we have established a company in Norway. So it was an amazing journey, something unbelievable. We were never planned, but this is something happened. So yeah, it was good. So, Samad bhai, how did you start that journey? So, as Tala said, last year in Oslo Innovation Week, we were planning to come, but unfortunately, the visa issues with the Pakistan and all the bad situation. Unfortunately. Yeah, it's very unfortunate, and I think we should do something about it. And anyways, so we applied for 4 person, and luckily I got the visa, and it was on the first day of the event. So I It had was to, about the last year. yeah, it was last year, Oslo Innovation Week. So when Okay. I got my passport, the one day was already passed of Oslo Innovation, but Oslo Innovation Week lasts for 7 days, so it's a week. So I had 6 days still left. So I immediately booked my ticket, and I came here alone, and it was not easy for me because I didn't know anyone here. तो मैं किसी को जानता नहीं था। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, आई मैनेज टू अंडरस्टैंड कहाँ से ट्रेन लेनी है, कैसे मैंने जो है वो होटल तक पहुँचना है, एंड देयर वाज स्पीकिंग एक लैंग्वेज बैरियर भी है थोड़ा सा यहाँ। तो समहाउ मैं ये रेफरेंस लिए दे रहा हूँ कि मुझे मुश्किल हुई आने में, क्योंकि आई विल कनेक्टेड विद जब मैं अब आया और जब मैं पहले आया तो कितना फ़र्क था। दैट्स एक्चुअली आई अचीव एज वेल। सो जब मैं यहाँ आया इन ऑस्लो इनोवेशन वीक, आई वाज अ स्पीकर देयर एज वेल। So after my session, Khurram came to me, and we discussed one idea, and he wanted to come up with a new product, which luckily we have already developed in Pakistan like 1 year ago. So I told him that what you are going to develop, what you want to develop, I have already developed that solution. Um, and then we met a couple of times, and then I went back to Pakistan. उसके बाद देन वी कनेक्टेड अगेन। आपको पता है इवेंट के बाद जितने भी लोग मिलते हैं वो आपस में इवेंट के बाद फिर फॉलो अप्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो दैट वाज अ रूटीन मीटिंग विद खुर्रम अगेन, एंड आई टोल्ड हिम दैट हमने बात करी थी, एंड ही सेड यस, हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग रही थी, तो मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो आई सेड ओके, इट्स योर्स, नो प्रॉब्लम, यू वांट टू लॉन्च इट इन नॉर्वे, आप मेरा सॉफ्टवेयर ले लो, आप इसको लॉन्च करो। देन अगेन फिर हमने इनको डेमोज वगैरह दिए, और इन लोगों ने फिर यहाँ उसको टेस्ट किया सॉफ्टवेयर को। Then they came back to me and they said कि if you want to receivership, if you want to take a raw receivership, तो हमें जो है वो अब यहाँ एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो और फिर हम डिस्कसिंग इट, तो फिर हमने यहाँ वी एंड अप लाइक दिस कि अगर कंपनी बनानी है, सो व्हाई डोंट वी एस्टैब्लिश डिजी ट्रेंड्स ओवर हियर, बिकॉज ये एक कंपनी बनाते डिजी ट्रेंड्स का रीसेलर बनते। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम डिजी ट्रेंड्स ही यहाँ बना लें। So it was actually his vision, because I don't live in Norway, I don't understand the laws here. But So luckily, difficult. yeah,
luckily he made something which was Especially when you possible. have a different language, entire Yeah. language is a different. Laws different, language different, ecosystem different, सब कुछ different था. But he told me he can do this. So I said, okay, so because we have company in US, we have company in Saudi, we have company in Dubai. Yes. So we already have branches, and I believe in partnerships and collaborations. So when he gave me that opportunity, I said, okay, I'm all in. Let's try. It took 8 months, I think. It was not an easy thing, and it was his dedication and his vision and his efforts. It's not a long time. 8 months 8 months for is- us in yeah, Dubai, we can get it done in like in a week. in a week. Yeah, in a week you can open a company. Because it's a Norway. Yeah, Everything I know. is going Now I know. with flow with the life. Yeah, now I know. So it took 8 months, but Alhamdulillah, today is a great day for us, and actually we just celebrated it. Yes. So we got our bank account, D number, Very nice. everything is now we are aligned, we are ready to launch. Very nice. So, Dr. Saab, entirely different field from the medical to the IT. How? नहीं, मेरे साथ जो हुआ था कि लास्ट ईयर बिफोर दिस मीटिंग समझ भाई, हमें टेक्नो की तरफ से एक फ्लायर आया था काम पे, जिसमें उन्होंने हेल्थ टेक के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखी थी. तो मैंने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि आई वांट टू जॉइन दिस, एंड दे सेड यस यू कैन जॉइन इट. तो उसकी तो फीस थी, मतलब 5,000 करोड़ थी, ह्यूज अमाउंट था. तो मैंने कहा यस वी पे फॉर इट इफ यू वांट टू गो एंड सी इफ एवरीथिंग विल गेट ओके. तो हमें गया, तो देन आई मेट सम हेल्थ टेक पीपल एंड आई वाज क्यूरियस about क्या हेल्थ टेक्नोलॉजी हमारे, मतलब हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है. जो हेल्थ में हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल फ्यूचर में एल्डरली वेव आ रही है, तो हम किस तरीके से इसको मीट कर सकेंगे जब हमें चैलेंजेस आएंगे. तो फिर इजाद लैब्स जो हैं अपने अर्जिश साहब एंड आजम मलिक साहब, उनकी एक प्रोडक्ट समिट थी, और मुझे इस बात का था कि यार कि ये कोई नॉर्वे की इनकी कोलेबोरेशन है कि बंदों से नॉर्वेजियन पाकिस्तानीज करा रहे हैं इनके साथ. जब मैं जाके प्रोडक्ट समिट में गया तो पता लगा ये तो है ही टोटल पाकिस्तान से आए हैं, और इन्होंने कितने सालों से लगे हुए हैं कई मुल्कों में सारे. तो फिर मेरी मुलाकात समझ बात से हुई, और देन इनकी जो थी वो पैनल डिस्कशन थी, एंड इनके साथ ये अपने बार बार हेल्थ का करने का. फिर शायद ये वो राइट पर्सन है. वहाँ पर हम लोग और भी अच्छे पाकिस्तान से लोग आए थे, मिले. तो फिर इनसे एक हमारी एक वो क्या कह रहे हैं, मतलब जहन मिल गया, आपस में तबीयत भी मिल गई, और उस हिसाब से फिर हेनरी को जब इनके साथ मिलाया तो हेनरी की भी इनके साथ अच्छी बात होगी. तो अगेन लिविंग इन नॉर्वे, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ लॉट ऑफ गुड कनेक्शन विद पाकिस्तान. तो हम ये सोच रहे थे कि यार कि पाकिस्तान की जो इमेज ये लेके आए हैं ना, वो मैंने नॉर्वे में पहले थी देखी पाकिस्तानियों की, लाइक कितने आ रहे हैं, और लोग बात करते कि पाकिस्तानी डेलीगेशन आई है पिछले साल की ना. तो बड़ा प्राउड फील कर रहा था यार कि ये बंदे हैं. और जिसको मैं मिलता था, 7 भाई थे और भी लड़के थे, मतलब फैसलाबाद से लड़के थे, अपना सियालकोट से लड़के थे, बड़े मतलब हाई मतलब पीक के लोग थे. मैं कहा यार ये कमाल के लोग, यही तो वो पाकिस्तानी हम दिखाना चाहते हैं. तो हमारी परसेप्शन चेंज है. फिर हेनरी से कहा चलो चलते हैं कराची इनके पास. इन्होंने कहा मोस्ट वेलकम. लेकिन हेनरी और मैं फिर थोड़े तैयार हो गए. पर हेनरी थोड़ा डरा शुरू में कि यार नहीं ये है वो है मसला, में कुछ नहीं होता 7 बजे. उन्होंने कहा नहीं आप आ जाओ, हम इधर ही हैं, तो कोई मसला नहीं. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा प्यारा ट्रिप रहा फ्यूचर फेस्ट में भी ये. तो उससे फिर हमने ये मतलब काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे हैं. हमारी मतलब कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, इनको इनकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो मिल चुके हैं, इनके एक्सेस मिल चुकी है. और ये मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम तो ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये था कि जैसे आपने अभी मुझे कहा कि आईटी की फील्ड और मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन आज हर बंदे की हर फील्ड में आपको आईटी के साथ काम करना पड़ता है. आप ये नहीं कह सकते कि इसके बगैर निकल जाए. तो फिर मैं कहा क्यों ना हम, मतलब इनके पास काम है, मैं नॉर्वे में हूँ, कल्चर को समझता हूँ, मार्केट को हम एक साथ समझ लेंगे, एंड व्हाई नॉट कोलैबोरेट. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मतलब दोस्ती का भी रिश्ता बन गया, पार्टनरशिप भी होगी. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे बहुत ही ज़्यादा हमें ना अच्छे नतीजे मिलने हैं इन फ्यूचर में इंशाल्लाह. क्या क्या जो सर्विसेज हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे जितने भी यहाँ पे नॉर्वेजियन पाकिस्तानी हैं, या जो नॉर्वेजियंस हैं, या फिर पाकिस्तान में लोग हैं, वो जानना चाहेंगे कि क्या सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं. Okay, so Digi Trends actually specialize in 2 verticals. I rather say 3 verticals. Number one, we have been working in the healthcare industry from more than 12, 13 years now. We are working with all the leading pharmaceutical like Pfizer, Sanofi, GSK, you name it. And we're also working with the leading hospitals in Saudi Arabia and in Pakistan as well. So we have solutions for pharmaceuticals, we have solutions for hospitals. So we are a health tech company. In addition to that, from last more than 5 years, luckily, alhamdulillah, we are also working
with the leading asset management companies and banks of Saudi Arabia. So we are into fintech as well. So these are the two main verticals. We develop solutions for banking, for asset management companies, and we develop solutions for hospitals and pharmaceuticals. The third vertical, which I'm very excited about, is startups. So what we do, we fund startups through technology. So we have put our budget aside, like let's say $500,000, $600,000 per year, and then we invest in good startups, in healthcare startups, especially, and then we invest through technology, and we take equity in against that. So this is the same thing we are planning to do in Norway. Today we had a very wonderful meeting with some of the government-based incubators and accelerators of Norway, and we are trying to connect them with other incubators. Like we are partnered with FinTech Saudi, we are partnered with National Incubation Center of Pakistan. So we are willing to connect them to develop an exchange program where the startups from here in Norway can launch their startups in Saudi, and the startups of Saudi can launch their products in Norway. So it will be an exchange program. We are working on that, and again, we will be working in the healthcare industry as well. So we got some good business before. That's a lucky thing, because in the process of this company formation, we got 2 clients. We delivered the 2 projects within before. Have you done any projects in Norway? Yeah, we have done 2. That's what I'm saying. Before, in the process of this company formation, we got some good projects and we delivered that, and the payment has also been received. How was that experience? Yeah, it was a great experience, but actually Talha is the right person to tell the experience about that, because he was taking the lead of those technical things. So what was the exciting thing in that experience? So what I found that something very different over here. I guess normally when we pitch the project, so we have to लोगों को लर्निंग देनी पड़ती है कि टेक्नोलॉजी इस तरह काम करेगी, आपके लिए इस तरह काम करेगी. बट बैक इन नॉर्वे हियर व्हाट आई फाउंड, लाइक लोग ऑलरेडी अवेयरनेस है इनके पास. दे ऑलरेडी नोज हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, हाउ द टेक्नोलॉजी कैन एम्पावर देम, how it can facilitate them. So yeah, there's a difference. I mean, they are already learned and they already understand the things. So you don't have to do the majority. I mean, you can say like Spoon feeding नहीं करनी पड़ती. They already knows those stuff, or they already knows exactly what they need exactly. And they are quite, I guess, highly tech, you can say. They are more advanced. In terms of technology, they are using in everywhere. They are using keyless cars, they are using keyless entries in all over the hotel, or keyless checkout, or things like that. So everything's automated already here. So yeah, I mean, people are a lot more awareness in compared to other regions where we go. So this is a good experience with working with them. So what you are offering in Norway? So just like someone told you, like we are offering collaborations. Yeah. Any type of tech. The Saudi and the Norway and the Saudi, Pakistan. Norway, Pakistan, Dubai. I mean, again, Dubai. What I would say, like this is the vision of Khurram. Actually, his love to Pakistan. Yes. This what make this happen. Actually, otherwise, it's very hard. Just like someone said, like it will take a lot of time to establish anything like that here in Norway, because of the language barrier. And because of the lot of compliances they have a lot of huge processes. They're not unlike the other countries around the world. So ये vision खुर्रम भाई की तरफ, खुर्रम की vision था actually he does all the efforts to make this happen. और इसमें बहुत सारे जितने भी कानूनी पेचीदगी हैं वो ये डील कर रहे हैं. Exactly. And because of him, this is possible, only possible. If somebody just come from Pakistan over here and just try to establish a company, it's not. I don't think it will be easy task for him. So, yeah, we have a good story to tell, because when we went to, in this process, we have to do our verification, ID verification and all. So we went to Islamabad for the ID verification, Islamabad embassy, Norway. When we went there and then we gave them the documents, so they were like a bit confused, because वो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, वीज़ा डॉक्यूमेंट सब. तो इनके लिए दे गॉट समथिंग न्यू, कि कोई आया है जो वीज़ा लेने नहीं आया, जो कंपनी बनाने आया है, और डॉक्यूमेंट तो दे ये एक बहुत बड़ी एक ऑनर था फॉर पाकिस्तानी. दिस इज द यूनिक थिंग यू केम फॉर, एंड वी हैव टू चेक दिस प्रोसेस
how we do it. Then they went inside, and then when they come back and they said, okay, come inside, and then they treated us very well. And फिर सारी हमारी verification हुई. So they told us that there are very few companies from Pakistan who dare this. And Khurram made it so easy for us. This is the one story. And the second story, that I was connecting with that same question, that when I came here last time, so I was all alone and I was trying to figure out how to go from the airport to the hotel and all that. This time when I came, they came from Norway. I landed at Amsterdam. They came all the way to Amsterdam to pick me up, and then we had a road Europe trip, you can say. So and I have so many friends. Celebration now. also. Yeah, I have so many friends already here, and it's like second home to me. So this is an achievement. Actually, very main nice. achievement is this. That's very nice. So, डॉक्टर साहब, आप इनकी तमाम चीज़ों की एक बैकबोन है, क्योंकि जितने भी यहाँ के रेगल्स लॉज हैं, तमाम चीज़ें हैं. और आज आपने बता रहे थे अभी मुझे कि फ़ाइट की इनके जो यहाँ का सोशल नंबर था बैंक अकाउंट के लिए, ये क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपके बगैर दैट वाज नॉट पॉसिबल. आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जी, हर काम जो करता है तो वो अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान तो बड़ा बेशक. वसीला बनता है. तो लेकिन आज का जो ज़ाहिर बात है, मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा प्लान है फ्यूचर में नॉर्वे के स्टार्टअप्स के साथ अलावा हेल्थ टेक में. जो चैलेंज मुझे पता नॉर्वे में एज अ फिजिशियन है वर्किंग फॉर 8 years, मुझे पता है प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन से इश्यूज़ हैं, सेकेंडरी में कौन से इशू हैं. तो उनको देख के तो टारगेट करके और उसके हाफ पे हम प्रोडक्ट्स भी डेवलप करेंगे और इन मार्केट्स को टारगेट करेंगे. तो ये एक हमारा मेरी तरफ से एम है कि मैं टोटल हेल्थ टेक में इनकी जो कॉम्पिटेंसी है फिनटेक में भी है, एडटेक में भी है, डिफरेंट सेक्टर्स में है, लेकिन जो मेरे लिए स्पेशली वो हेल्थ टेक है. क्योंकि जैसे शुरू में आपने कहा मेरी फील्ड है, तो उसमें हेल्थ टेक में मैं इनको गाइड दे सकता हूँ, इनसे हेल्प ले सकता हूँ. तो दूसरी बात आज इसी की बात में रिलेट करूँगा, जो कह रहे हैं कि आज हम जब बैंक में गए तो जो मुझे एक प्राउड फील हुआ ना, तो एडी नंबर दिखा रहे थे, तो वो ये कहती है, आर यू प्लानिंग टू मूव टू नॉर्वे? मैंने कहा नो, वी आर नॉट प्लानिंग टू मूव टू नॉर्वे, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान बट वी आर डूइंग बिजनेस इन नॉर्वे. तो वो एक शौक में चली गई. जो आता कहता है जी हम तो यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, हम तो छोड़ के आ रहे हैं. तो वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि यार कि ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो पाकिस्तान का इमेज अच्छा कर रहे हैं, परसेप्शन लोगों के लिए बेहतर कर रहे हैं. और हम हमारी स्टोरी से इंशाल्लाह आई एम श्योर कि बहुत सारे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर जो पाकिस्तान में बैठे हैं मोटिवेट होंगे कि यार कि लेट्स गो, लेट्स ट्राई यूरोप, लेट्स ट्राई नॉर्वे, लेट्स ट्राई दीज कंट्रीज. स्कैंडिनेविया जैसे हम बात करते हैं अनएक्सप्लोर्ड एरिया है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, कल्चर बैरियर. अदरवाइज यूएस, यूके, स्पेशली वेदर. या वेदर, या एज यू एक्सप्लेन. और तलहा भाई के लिए स्पेशली जो है वो Yes. विदाउट स्पाइस. Exactly. सो नाजरीन, ये कहानी है पाकिस्तानियों की और एक साथ नॉर्वेजियन हेनरी जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है. इनका एक सक्सेसफुल जो एक जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है. और बीइंग अ पाकिस्तानी, डॉक्टर राजा खुर्रम नॉर्वे में भी रहते हुए यहाँ पे बॉर्न हैं यहाँ पे, इसके बावजूद उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत आप देख सकते हैं कि वो अभी भी चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें. पाकिस्तान जो दुनिया की चौथी बड़ी सस्ती लेबर है आईटी की फील्ड में, मेरे ख्याल में ऐसे ही है. तो पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे मुल्क में अभी, जिनका हमारी इनके दोस्तों को फेस करना पड़ा कि दुबई के वीज़े भी नहीं मिले. तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें, हम अपने मुल्क के लिए ऐसे काम करें जो ये लोग कर रहे हैं.